Namaste and welcome to Learning. Today's video is about the principles of communication, or simply known as the 7C's of communication. In today's video, we'll explore each of these principles to see how they contribute to more meaningful and productive communication. So, let's get started. Let's begin with the introduction. The 7C's of communication are a set of principles designed to ensure effective and efficient communication. These principles help in delivering clear, concise, and impactful messages. संचार के 7C's सिद्धांतों का एक समूह है जो प्रभावी और कुशल संचार को सुनिश्चित करता है। ये सिद्धांत स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी संदेश देने में मदद करते हैं। The first principle of effective communication is clarity. Clarity ensures that the message is easily understood by the recipient without any confusion. In other words, the message should be straightforward and meaningful. संचार का पहला सिद्धांत है स्पष्टता। स्पष्टता ये सुनिश्चित करती है कि संदेश प्राप्तकर्ता के लिए आसान और स्पष्ट हो, जिससे कोई भ्रम न हो। दूसरे शब्दों में, संदेश सीधे और अर्थपूर्ण होना चाहिए। How to achieve clarity? Number 1. Use simple and straightforward language. सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। Avoid jargon and technical terms unless the audience is familiar with them. श्रोताओं के लिए अनजान तकनीकी और विशेष शब्दों का प्रयोग न करें। Focus on a single objective per message. प्रत्येक संदेश में केवल एक उद्देश्य पर ध्यान दें। Example: Instead of saying, "We need to synergize our strategic objectives," say, "We need to work together to meet our goals." By keeping the message clear, we make it more effective and impactful for the audience. The second principle of effective communication is conciseness. Conciseness means keeping the message brief and to the point, avoiding unnecessary details that can dilute its impact. दूसरा प्रभावी संचार का सिद्धांत है संक्षिप्ति। संक्षिप्ति का अर्थ है संदेश को बिना अनावश्यक विवरण के संक्षिप्त और सटीक रखना, जिससे इसका प्रभाव बरकरार रहे। Now how do we achieve conciseness? Number 1. Stick to the main points. केवल मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। Number 2. Eliminate redundant words and phrases. अनावश्यक शब्द और वाक्यांश को हटाएं। Number 3. Avoid filler words and lengthy explanations. अवरोधक शब्दों और लंबे विवरणों से बचें। By keeping messages concise, we respect the audience's time and ensure the message is impactful. Example: Instead of saying, "Due to the fact that we are running short on time, we need to speed up the process," say, "We need to speed up because we're short on time." The third principle of effective communication is concreteness. Concreteness means providing specific details and facts to make the message more credible and understandable. तीसरा प्रभावी संचार का सिद्धांत है ठोसता। ठोसता का अर्थ है संदेश को भरोसेमंद और समझने योग्य बनाने के लिए साफ जानकारी और तथ्य प्रदान करना। Now, how to achieve concreteness? Number 1. Use concrete and specific terms. ठोस और विशिष्ट शब्दों का उपयोग करें। Number 2. Provide examples and statistics. उदाहरण और आंकड़ों का प्रयोग करें। Number 3. Avoid vague statements. अस्पष्ट बयानों से बचें। By using concrete information, we make the message more convincing and easier for the audience to understand. For example, instead of saying, "Sales have increased," say, "Sales have increased by 15% in the last quarter." The fourth principle of effective communication is correctness. Correctness means ensuring the message is free from errors and is grammatically correct. चौथा प्रभावी संचार का सिद्धांत है सटीकता। सटीकता का अर्थ है कि संदेश बिना किसी त्रुटि के हो और व्याकरणिक रूप से सही हो। Now, how to achieve correctness? Proofread for spelling, grammar, and punctuation errors.
वर्तनी, व्याकरण और विराम चिन्ह की त्रुटियों को ठीक करें। यूज़ एक्यूरेट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, सटीक डेटा और जानकारी का प्रयोग करें। Ensure the message is appropriate for the audience, सुनिश्चित करें कि संदेश श्रोताओं के लिए उपयुक्त हो। By ensuring correctness, we make the message more professional and reliable for the audience. For example, instead of saying, they're going to present their findings, say, they're going to present their findings. The fifth principle of effective communication is coherence. Coherence means ensuring the message is logical and well organized, with all points connected and relevant to the main topic. पांचवां प्रभावी संचार का सिद्धांत है सुसंगतता। सुसंगतता का अर्थ है कि संदेश तार्किक और सुसंगठित हो, जिसमें सभी बिंदु मुख्य विषय से जुड़े और प्रासंगिक हों। So, how do we achieve coherence? Ensure all parts of the message are relevant to the main topic. सुनिश्चित करें कि संदेश के सभी भाग मुख्य विषय से संबंधित हों। Structure the message logically. संदेश की संरचना तर्कसंगत ढंग से करें। Use transitional, संक्रमणीय words to connect ideas. विचारों को जोड़ने के लिए संक्रमणीय शब्दों का उपयोग करें। By maintaining coherence, we help the audience easily follow and understand the message. For example, instead of presenting disjointed ideas, organize the message with a clear introduction, body, and conclusion. The sixth principle of effective communication is completeness. Completeness means providing all necessary information so the recipient has everything needed to understand and respond appropriately. छठा प्रभावी संचार का सिद्धांत है पूर्णता। पूर्णता का अर्थ है सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करना ताकि प्राप्तकर्ता संदेश को समझ सके और उचित प्रतिक्रिया दे सके। Now, how to achieve completeness? Number 1. Answer all questions the recipient might have. प्राप्तकर्ता के सभी संभावित प्रश्नों का उत्तर दें। Number 2. Include all relevant details. सभी उपयुक्त विवरणों को शामिल करें। Number 3. Provide clear instructions or next steps. स्पष्ट निर्देश या अगले चरण प्रदान करें। By ensuring completeness, we make sure the recipient has all they need to respond effectively. For example, instead of saying, submit the report soon, say, submit the report by Friday, including the sales data and the marketing analysis. The seventh and final principle of effective communication is courtesy. Courtesy means communicating in a polite and respectful manner, taking into account the recipient's feelings and perspectives. सातवां और अंतिम प्रभावी संचार का सिद्धांत है विनम्रता। विनम्रता का अर्थ है सम्मानपूर्वक और विनम्र ढंग से संवाद करना, जिसमें प्राप्तकर्ता की भावनाओं और दृष्टिकोण का ध्यान रखा जाए। And how do we achieve courtesy? Use a polite tone and language. विनम्र स्वर और भाषा का प्रयोग करें। Address the recipient's needs and concerns. प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं और चिंताओं का ध्यान रखें। Avoid negative or harsh words. नकारात्मक या कठोर शब्दों से बचें। By practicing courtesy, we build positive relationships and create a comfortable communication environment. For example, instead of saying, you didn't understand the instructions, say, let me clarify the instructions for you. In conclusion, the 7 C's of communication are essential guidelines for creating effective messages. By focusing on clarity, conciseness, concreteness, correctness, coherence, completeness, and courtesy, communicators can deliver information more efficiently and effectively. संचार के 7 C's प्रभावी संदेश बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश हैं। स्पष्टता, संक्षिप्तता, ठोसता, सटीकता, संगति, पूर्णता और विनम्रता पर ध्यान देकर संचारक सूचना को बेहतर ढंग से और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं।
That's all for today's video. Thanks for watching. If you enjoyed this content, please like, share, and subscribe for more updates and lessons.